Assalamu alaikum students, welcome again. Actually, students, again we have to see some status, you can say, we have to see the different symbols of DFD. Like already हमने पिछली स्लाइड में हमने इसको क्लिप में डिस्कस किया. जनरली जो हमारा प्रोसेस मॉडलिंग है वो to capture, to manipulate and store the data. For that reason, it can be used. A common form of process model is a data flow diagram. ओके नाउ डीएफटी के रिगार्डिंग डेफिनेटली आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं how data will flow or how information will pass from one step to another step. That can be, we can say, that is called data flow diagram. This one is just like your flow chart in which we can mention we have to take the input, we have to process, use the condition, and then we have to get the output and so on. So this is your flow chart. Now what's the difference? Flow chart is again pictorial representation of flow of information. Data flow diagram, again, it's the flow of information. Data flow diagram, that means how data will move, how data will, you can say, flow, and how information will flow in the system. So for that reason, you have to make that DFD. Now, what are the DFD mechanics? These are the symbols of DFD, like process. आप ये वाला प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं. These are the two symbols, like data store के point of view से, source और sink के point of view से you can use these symbols, and for these are the arrows for data flows we can use, right? So generally, a data store might contain data about customer, student, and so on. इस तरह का अगर हम डेटा स्टोर की जब बात करते हैं तो ये प्रोसेस होता है जो आपकी फंक्शनैलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा स्टोर, it's just like a file or a database where you can store the data. Think are the source from which you can take the data, where data you can say store and so on. So these are the different symbols. Now DFD mechanics के point of view से process, source and sink ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं. Another very important thing that we have to discuss is about context diagram. There are three levels of DFT, very important thing, like context level diagram, then zero level diagram, then first level diagram, and then second level diagram. If we are talking about आपके project के point of view से देखा जाए तो आपके project के अंदर we are concerned with the only, we can say, zero context, zero and first level DFT. There is no need to go onward. If you want to, if you feel कि आपने ज़्यादा डिटेल बतानी है तो आप सेकंड तक जा सकते हैं. अदरवाइज आपकी कॉन्टेक्स्ट और फर्स्ट लेवल डायग्राम बहुत होती है DFD के पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम होती क्या है? इट्स लाइक बिग पिक्चर रिप्रेजेंटेशन. इट गिव्स द ओवरव्यू ऑफ योर सिस्टम. आपके सिस्टम का एक ओवरव्यू मिलता है आपको. दिस वन इज द इनपुट, दिस वन इज द आउटपुट, and this one is the your major system, that is your major process. So basically आपका फूड ऑर्डरिंग सिस्टम है जिसमें आपका किचन इज, वी आर गोइंग टू टेक द, you can say, order, food order, and customer is the, you can say, person, or from where we can take the input. So generally input और output आपकी सेम रहती है जब भी हम थ्रू प्रोसेस एक सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हो, चाहे वो जीरो लेवल हो, चाहे वो फर्स्ट लेवल डायग्राम हो. तीनों में आपके इनपुट और आउटपुट को बैलेंस होना चाहिए. So these are the, we can say, different symbols and concepts. Now this one is about context diagram, जिसमें if you want to तो यहाँ पे आप zero mention कर सकते हैं. If you don't want to तो there is no need of आप ना करें. आप इसको round circle भी बना सकते हैं process के point of view से. Now next one is about opening context level DFD. Now what is context level DFD? How we can use it, जनरली कैसे यूज करते हैं हम और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हम नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स.